Assalamu alaikum, dear students. In this lecture, we are going to explore the key concepts of metric space in mathematics. So, we have the outlines. In such a way, we have to explore the key concepts of a metric space. First thing, we have to introduce the metric space. Then we have to define metric space, property of metric space, examples of metric space, open क्लोज सेट्स एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से कन्वर्जेंस इन मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, कंटिन्यूटी एंड कम्पैक्टनेस क्या होती है, यानी कम्पैक्टनेस का कंसेप्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेस कहाँ कहाँ पे हम इसके एप्लीकेशन को देख सकते हैं, और इसी तरह कंक्लूजन फीचर डायरेक्शन ये हमारे पास क्या है, वी हैव टू फाइंड इन सच slides in a lecture. So as we move forward to the introduction to metric space, as we know, the metric space is the foundation and key concept in the mathematics, essentially for understanding the geometry and analytical property of space. So if any things in a space, they have some property like its what is its geometry and its analytical position. So the provide framework for discussing concepts such as distance, convergence, and the continuity. There is three basic concepts we have to discuss. The first thing is distance, second is convergence, and third is continuity. So in this presentation, we will dive deep into metric space, starting from basic definition and the properties, leading to their application and implementation in various fields. So definition of metric space के ऊपर उसके definition ये है, metric space is a function that is defined or on the set. इस सेट के ऊपर हम मेट्रिक के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दैट मेयर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द सेट। उस सेट के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को मेयर करने के लिए जो डिस्टेंस फंक्शन को हम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज मेट्रिक स्पेस मैट्रिक्स। एंड दिस फंक्शन नोन एज मैट्रिक्स satisfies three essential properties. जब ये तीन एसेंशियल या तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर देता है, तो देन दैट वी आर कॉल्ड दैट इज अ मैट्रिक. द पेयर ऑफ not empty set X and the distance is called metric space. So the first property, that is non-negative, the second is symmetric, and the third is triangular inequality. Formally, a metric space is the pair of not empty set and the distance D. The pairs of X and D is called metric space, where X is a set and the D is a metric space. इसमें x जो है वो सेट है बट नॉट एम्प्टी सेट होना चाहिए. सो दिस इज एग्जांपल, x क्रॉस x goes to 0 or infinity not non-negative number, so the distance of the d 0 goes to infinity. This adheres to this property. So properties of metric space, the key characteristic they define metric space. नंबर वन, उसके अंदर हमारे पास नॉन नेगेटिव एंड आइडेंटिटी है. In a metric space, the distance between points is always non-negative, means distance is greater than 0 for any point x and y. This distance is 0 if and only if the two points are identical. जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर ओवरलैप करेगा तो हमारे पास डिस्टेंस जो होगी वो 0 होगी. अदर देन हमारे पास इफ x and y are not equal, तो सो हमारे पास डिस्टेंस ग्रेटर देन 1 and greater than 0 होगी. So ensure that the clear identification of distinct elements. The second is symmetry. Symmetry का मतलब ये है, let's suppose the metric is symmetric property for any two point x and y in space. The distance from x to y is the same as from y to x. Formally, statements say distance of x and y equal to distance of y and x.
These characteristics ensure the consistency in the measuring distance. So the third is triangular inequality. Triangular inequality condition state that the 3 points x, y, and z in the metric space. The distance from x to y plus the distance from y to z is the least distance from x to z. The distance of x to z is less than the distance of xy less than xy plus distance of yz. This property reflects how distant relate within this space. तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है मेट्रिक स्पेस की दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. So examples of metric space. Commonly, metric space are encoded in matrix that is Euclidean space. The most familiar example of metric space is Euclidean space, where the distance is defined by the standard Euclidean matrix for 2 points in a 2-dimensional space. Like हमारे पास 2 points हैं x1, x2, y1, y2. The distance is defined as under root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. So this is the distance function of Euclidean space. Second is the discrete matrix. In the discrete matrix space, the distance between distinct point is always 1. Yani distinct point x is not equal to y is 1, while the distance from point to itself is 0. It means that किसी point को, let's suppose x is equal to y goes to 0, जबकि x is not equal to y goes to 1. तो फार्मली हमारे पास दो सिचुएशन बनेंगे. अगर if a not equal to y होगा तो हमारे पास x नॉट इक्वल टू y होगा, तो हमारे पास डिस्टेंस 1 की इक्वल होगी. अगर if x is equal to x हो गया या x is equal to y हो गया तो देन हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 0 होगी. दिस मैट्रिक्स इज सिंपल बट यूजफुल इन वेरियस एप्लीकेशन. इसकी एप्लीकेशन के ऊपर, डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर हम देख भी लेंगे. सो लास्ट इन थर्ड, इस स्लाइड के ऊपर जो थर्ड हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है दैट इज टैक्सी केव. अनदर कॉमन मैट्रिक्स इज अ टैक्सी केव और मैट्रिक्स applicable in grid like path system. Like हमारे पास grid path system के ऊपर distance को calculate करें, that is called taxi cave. So here the distance d between points x1, y1, x2, y2 is calculated as distance x2 minus x1 plus mod of x2 minus x1 mod plus y2 minus y1 represent the total traveling distance across axis aligned path. तो इसके अंदर हमारे पास होता है ये कि हम ग्रिड वाइज जो है वो कोई सिस्टम बनाए, लाइक a11, a12, a21. इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो ग्रिड वाइज जो सिस्टम बन जाती है उसके थ्रू अगर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करें, दैट इज कॉल्ड मेथड distance or taxi cab distance. So this is a common metric space examples in metric space. So another is that is open and closed set. What is mean by open and closed set? Understanding the fundamental set concept, like हमारे पास open set, closed set. So the first thing is that a set is a term open in a metric space if for every point within the set, अगर हमारे पास सेट के तमाम एलिमेंट्स there exists a radius r, there exists वहाँ पे कोई r exist करे such that the ball center at point. अब बॉल जो है वो b of x is shows is center and r is the radius.
रेडियस यानी एक्स नॉट जो होगा सेंटर होगा, आर जो है वो हमारे पास रेडियस होगा, रिमेन विद इन द रेस्ट विद इन द सेट, दिस crucial concept that explain the convergence and continuity. Let's suppose उस बाल के अंदर जो भी पॉइंट होगा, राइट, उस बाल के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी होंगे. So the closed set that contrasts a set is called closed if it contain all its limit point. इसके boundary points भी include हो, that is called a close point. A limit point is a point that can be approached arbitrarily close to by a point within the set, and closed sets are necessary for understanding the compactness. तो हमारे पास ओपन सेट के अंदर रेडियस के अंदर के तमाम एलिमेंट होंगे जो कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी को शो करेंगे, जबकि ओपन सेट के अंदर क्लोज सेट के अंदर हमारे पास जो लिमिट पॉइंट्स होंगे वो भी इंक्लूड हो जाएंगे. तो बॉन्डेड वर्सेस अनबॉन्डेड सेट. A bound set in a metric space can be enclosed with a ball of a finite radius. तो उस बाल के अंदर जो हमारे पास जो भी पॉइंट आ जाएंगे, यानी पॉइंट आ जाएगा, वो हमारे पास कन्वर्जेंस भी होंगे, बॉन्डेड भी होंगे. वाइल अनबॉन्डेड सेट कैन नॉट, जबकि अनबॉन्डेड जो होते हैं वो कन्वर्जेंस में हमारे पास अनबॉन्डेड जो होंगे वो अगर हमारे पास अपर बॉन्ड नहीं है तो इट मींस दैट दे आर नॉट कन्वर्जेंट. फॉर एग्जांपल द यूक्लिडियन स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विद अ डिस्टेंस लेस देन 5 फ्रॉम द ओरिजिन इज बॉन्डेड. तो 5 से लेस वाले जो भी हैं वो बॉन्डेड है. इसी तरह neighborhood and closure. Neighborhood around a point play a vital role in the understanding open and closed set. The closures of the set include all its points and its limit point, providing a complete picture of the set structure within a metric space. So, convergence in a metric space. Understanding how sequence behave in space. Sequence convergence. A sequence is a metric space. Actually, sequence हमारे पास metric functions होती हैं. It is said to converge to a point if the distance between the sequences elements and sequence के elements के दरमियान distance and the point approach zero, जब zero की तरफ approach कर रहा है, formally a sequence xn sequence to x if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number या a set of natural number n such that for all n greater than n, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसका एक सबसेट हम उठाएं, यानी उससे छोटा सा कोई भी बड़ा सा कोई भी नंबर उठाएं और इसके दरमियान एन ऑफ दिस डिस्टेंस कैलकुलेट करें, वो अगर लेस देन जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन है तो वो कन्वर्ज करेगी, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी. So the another famous sequence, that is Cauchy sequence. The Cauchy sequence is one whose the distance between elements became arbitrarily small as sequence progress. These concepts are crucial for understanding completeness within a metric space, indicated that the point get essentially close to each other. Continuity and compactness concept. What is the continuity and the compactness concept in a metric space? So continuity is a context of metric space referred to a function f being continuous at a point x if for every epsilon greater than 0 there exists a del greater than 0 such that distance of f of x and f of y is less than epsilon, where distance of x and y less than del. So compactness, on the other hand, indicated that every open cover of a set have a finite subcovers. This is essential for the understanding convergence and boundedness property in analysis. So application of metric space. तो जो हमारे पास रियल वर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन है या एप्लीकेशन है, देयर इज अमेजिंग वन. सो फर्स्ट थिंग है डेटा एनालिसिस. हम मेट्रिक स्पेस को यूज़ करके मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी या मॉडर्न जो
कंसेप्ट में उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको जो बैक एंड की जो चीज़ें हमने मैथमेटिक्स से जो बताई हम उनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सो I am excited to tell about the application of metric space. That is number one, data analysis. How we can apply these function metric space the concept we have to apply. We have to analyze the data. So metric space are widely used in data analysis, facilitating uh, facilitating clustering algorithm and a nearest neighbor search. These application roles and effect to decision measuring to understanding the relationship and the structure with the data set. द फर्स्ट थिंग इज क्लस्टरिंग के अंदर, इसके क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के अंदर हम डेटा एनालिसिस के लिए इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स स्पेस का, जो कि एआई के एल्गोरिदम्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं। क्लस्टरिंग इज द सुपरवाइज मशीन लर्निंग का जो है वो हमारा अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है। इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क थ्योरी, मैट्रिक्स स्पेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ न्यूरल नेटवर्क network theory by defining distance function node help to analyze and optimize network performance and reliability. This has application in telecommunication and data routing. So third जो है वो हमारे पास है कंप्यूटर ग्राफिक्स। इन कंप्यूटर ग्राफिक मैट्रिक्स स्पेस help manage spatial relationship between objects. They assist in the collision detection and renerding techniques by quantifying distance and the relationship between various shapes in graphical environment. And the last one, that is machine learning. In machine learning metrics, underpin algorithms such as support vector machine and clustering techniques where understanding the distance between points in vital for classification and make prediction based on input data. तो ये हमारे पास एप्लीकेशन है, दिस इज अमेजिंग एप्लीकेशन ऑफ metric space. To show conclusion and future direction, summarize the key takeaway and the future in light. Relevance in modern mathematics. Modern mathematics and metric space contain relevance and involving areas with mathematics. Their concepts and apply across various mathematical disciplines, making them fundamental to both theoretical and practical application. Okay, and that is feature research areas. Feature research may explore advanced metrics, new classes of space, and their implementation in high-dimensional analysis, investigation, interaction between different species types, and leads to innovative theoretical developments. Educational importance. Teaching of metric space is crucial for developing rigorous mathematical thinkers. Education in this area can be enhanced student understanding in various analytical principles and their real world application. To say so, that's I think. Thank you for your attention.